गुड मॉर्निंग। आज मेरा सेकेंड डे है बैंकॉक में एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर थाईलैंड्स हिस्ट्री, कल्चर एंड टेम्पल्स। मेरी आज की पहली डेस्टिनेशन है ग्रैंड पैलेस। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू रीच देयर, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैब मोटर बाइक से जाऊंगा बिकॉज इट वॉज द फास्टेस्ट। ग्रैंड पैलेस पहुंच के मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई दैट इट इज़ द बिजिएस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन द सिटी। नो डाउट्स, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड क्लाइमेट इट कैन बी हेक्टिक। इफ़ यू वांट माय ओपिनियन, गो देयर अर्ली इन द मॉर्निंग। और हाँ, ग्रैंड पैलेस की एंट्री फ़ी है 500 बाट्स पर पर्सन। अगर आपको ऑडियो टूर रेंट करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट फॉर एडिशनल 200 बाट्स। If you want to hire a human guide, you can also do that, but you'll have to negotiate a rate with them. And in order to show respect, you have to dress appropriately. Grand Palace is a complex of numerous buildings, halls, pavilions, temples, gardens, etc. इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1782 में by the order of King Rama I. Do you know this palace was initially built entirely out of wood? Then King Rama I ordered his men to go to the old city of Ayodhya to find more material for the construction. जहाँ मैं कल जाने वाला हूँ, by the way. It's gonna be extremely exciting for me because I'm gonna see the ruined temples. आज ग्रैंड पैलेस पब्लिक के लिए एज अ म्यूजियम ओपन है, बट दे आर स्टिल वर्किंग रॉयल ऑफिसेज इनसाइड। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वत फो जाऊँगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। इट्स एन ईजी 10-minute वॉक बिटवीन हियर एंड द पैलेस, एंड द एंट्रेंस टिकट विल कॉस्ट यू 200 बाट्स पर पर्सन। Okay. थैंक यू।
Wat Pho बैंकॉक का सबसे पुराना टेम्पल है and it was founded in the 17th century when the Kingdom of Thailand was still based in Ayutthaya. This means that the temple is much older than Bangkok itself. I would personally recommend that because it's a giant reclining Buddha. It's about 46 meters long, covered in gold leaf. But what does the reclining Buddha represent? It actually represents Buddha's last moments on earth during his illness, nirvana after death. (1832) में रामा III की कमांड के अंडर इस टेम्पल को एक्सपैंड किया गया और लोकल्स यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ने आने लगे और साथ साथ ट्रेडिशनल थाई मसाज भी. And this temple became Thailand's first public university. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वत अरुण जाऊंगा, फॉर विच आई हैव टू क्रॉस चाओ फ्राया रिवर. Which one is 2A? 2A just non-stop around non-stop and okay. then come back. Okay. And which one? This one same like this around stop Wat Arun half an hour after come back here. Okay. 1.5 hours. 1.5 hour. Or 2 hours this canal around stop Wat Arun come back here. Okay. 2 hours. I want to go here. Your kid farm? Yeah, floating market. No, the floating market around here. Oh, The okay. market they have around here, and then they have the small one, small market you see on the way. This one is here. This is a market only open weekend. Only for weekend. This one, today. वत फो से वत अरुण जाने के लिए आप बोट से रिवर क्रॉसिंग कर सकते हैं जिसकी टिकट सिर्फ 4 बाट्स है. अगर आप डाउनटाउन एरिया में हैं तो आप मीटर टैक्सी या ग्रैब कर सकते हैं और अगर आप टेंपल के पास हैं तो आप टुक टुक भी कर सकते हैं. Wat Arun is also known as the Temple of Dawn, which was named after the Hindu god Aruna. The main feature of Wat Arun is its central prang, which is basically Khmer style tower. And you can find Khmer architecture in Cambodia, जहाँ मैं अपने थाईलैंड ट्रिप के बाद जाने वाला हूँ. लोग कहते हैं कि ये टेम्पल सनराइज में बहुत अच्छा लगता है, बट आई हैव टू एडमिट वत अरुण उतना ही स्टनिंग लगता है आफ्टर सनसेट.
Unfortunately, it was past its closing time, so I couldn't make it at the top. I'll beg you guys, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो plan your itinerary and start your journey early in the morning. And before you guys go, I just want to say that I'm coming up with more of Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam. So thank you for watching, and if you liked this video, you know the rest.